Kardama Muni is addressing the Supreme Lord who has appeared in front of him. कर्दम मुनि श्री भगवान को संबोधित करते हैं जो उनके समक्ष प्रकट हुए हैं. In this verse, he is particularly describing the nature of the Lord's form. इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान का जो स्वरूप है उसका स्वभाव वर्णन कर रहे हैं. Commonly, people know God has no form. सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है. But when God is described as formless, it means that he has no material form. जब भगवान को निराकार रूप में वर्णन किया जाता है तो इसका अर्थ है कि उनका कोई भौतिक आकार या भौतिक रूप नहीं है. But actually the Lord has a spiritual form. किंतु वास्तव में भगवान का दिव्य रूप है. And this form is eternal, just like anything else, spiritual. और ये जो भगवान का दिव्य स्वरूप है ये शाश्वत है, जैसे हर आध्यात्मिक वस्तु शाश्वत होती है. And when the Lord incarnates, he does not accept a material form, but he comes in his own spiritual form from the spiritual world. जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे कोई भौतिक तत्वों का शरीर धारण नहीं करते, वो आध्यात्मिक जगत से अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप से यहाँ प्रकट होते हैं. So in the spiritual world, the Supreme Lord is eternally present in his eternal spiritual form, always. So आध्यात्मिक जगत में भगवान शाश्वत रूप से अपने शाश्वत दिव्य स्वरूप में विद्यमान रहते हैं सदा. So Kardama Muni is confirming that the form he is seeing in front of his eyes, his own eyes, with his own eyes, is actually not a material form. So कर्दम मुनि इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जो स्वरूप अपने समझ अपनी आंखों से देख रहे हैं ये असल में कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है. Even devotees in the temple, we don't worship some material form, even though the deity appears to be made of some marble or metal like that. भारतदेवी मंदिर में कोई भौतिक मूर्ति भौतिक स्वरूप की पूजा नहीं करते, यद्यपि शिव विग्रह प्रतीक होते हैं कि वे धातु के लकड़ी के पत्थर के बने हैं. So the Lord becomes visible even though he appears in a spiritual form. He becomes visible to our eyes which can only see material forms. So भगवान जब अवतरित होते हैं अपने दिव्य स्वरूप में, किंतु हमारी आंखों से हम सिर्फ भौतिक स्वरूप ही देख सकते हैं. तो भगवान इस तरह से हमारे आंखों को गोचर होते हैं. So it doesn't mean that when the Lord appears in a spiritual form and we are able to see him, it doesn't mean that because we are able to see only material forms, therefore he has a material form. So भगवान का स्वरूप दिव्य है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सिर्फ भौतिक स्वरूप देख सकते हैं और भगवान उस स्वरूप में प्रकट हुए तो उनका स्वरूप भी भौतिक हो गया. Rather, he gives us the power to see his spiritual form even though we don't have the power. So भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि हम उनका दिव्य स्वरूप देख सकें, यद्यपि हमें वो शक्ति नहीं होगी. Similarly,
the form of the deity, even though completely spiritual, is visible to our eyes only because the Lord has agreed to be seen in that particular form of the deity we are seeing. यद्यपि शिव विग्रह का स्वरूप दिव्य होता है, इनको हम अपनी आंखों से देखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि भगवान इस स्वीकृति देते हैं कि हम उन्हें उस रूप में देख सकें। So what is the proof that the form of the deity we are seeing is actually a spiritual form? तो इस बात का क्या सबूत है कि जो हम शिव विग्रह का स्वरूप देखते हैं वो वास्तव में दिव्य स्वरूप है? Is because devotees who worship or have darshan or bow down or offer prayers to the real spiritual form of the deity actually experience a transformation of heart, which is called the development of bhakti. So भक्तजन जब भगवान के शिव विग्रह के समक्ष प्रणाम करते हैं, सेवा अर्पण करते हैं, इत्यादि सेवा करते हैं, तो उनको अपने हृदय में परिवर्तन का अनुभव होता है, और ये भगवान के दिव्य कृपा है। Whereas somebody may imagine some material form to be the form of God, and that imaginary form they can worship for millions of years. There will be absolutely no transformation of heart. यद्यपि कोई किसी भौतिक स्वरूप को भगवान का स्वरूप मानकर लाखों वर्षों तक कोई उसकी उपासना करे, तो भी उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। When I say no transformation of heart, there will be no spiritual change. So हृदय परिवर्तन का अर्थ है कि उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं आएगा। So when we see any devotee, anybody who takes to the process of pure devotional service, when they actually worship the deity or they bow down before the deity, they have darshan of the deity, they pray to the deity, they accept remnants of food offered to the deity, then when they develop bhakti, that is proof that that form is not material. जब कोई भगवान के शिव विग्रह के समक्ष प्रणाम करता है और सेवा अर्पण करता है, प्रार्थना करता है, उनका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है, तो इस तरह से उसके अंदर भक्ति विकसित होती है। तो इसका अर्थ निकलता है कि वो भगवान का स्वरूप कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, दिव्य स्वरूप है। And here in this verse, Kardama Muni is telling all the different forms, because Lord has many forms. So all those forms are completely spiritual and they are very pleasing to the devotees. So यहाँ पर कardama muni बता रहे हैं कि भगवान के नाना प्रकार के स्वरूप हैं, रूप हैं, और अनेक रूप हैं, वो सभी के सभी दिव्य हैं और भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। He has many forms because he appears in a particular form for particular devotees who actually relate with him or connect with him in that particular form. So भगवान के अनेक स्वरूप हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वे अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, अनेक भक्तों के लिए, और भक्त भगवान से उनके कुछ स्वरूप में संबंध स्थापित करते हैं। Just like the example is given by Srila Prabhupada in the purport about Hanuman, the great devotee of Lord Rama. Now Hanuman says, I know that there is no difference between the form of Lord Narayana and the form of Lord Ramachandra, whom I worship. So हनुमान बोलते हैं कि मुझे पता है भगवान नारायण और भगवान रामचंद्र जिनकी मैं उपासना करता हूँ, इनके स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। But still Hanuman says, I like to worship the form of Lord Ramachandra only. किंतु फिर भी हनुमान बोलते हैं कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप की ही उपासना करना प्रिय। So the understanding is
correct understanding is there is only one Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead, and even though He is only one person, He is simultaneously present in so many unlimited spiritual, personal forms. सो सही समझ ये है कि केवल एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे असंख्य दिव्य रूपों में विस्तृत हैं। All these forms are actually having their own particular devotees who worship that form, who are relating with that form, particular form in which the Lord actually relates with them. सो भगवान के सारे स्वरूप जो हैं अनेक स्वरूप ये इनके अपने इन सभी स्वरूपों के अपने भक्त हैं जो भगवान से उनके उस रूप में आदान प्रदान करते हैं और भगवान की रेसिप्रोकेट करते हैं। Just like Lord Rama, he has that particular form in which, beginning with Hanuman, all the devotees of Lord Rama worship him and pray to him and offer him different kinds of services eternally. सो भगवान श्री राम का जो स्वरूप है उसमें भगवान की और उनके अनेक भगवान के इस स्वरूप में उनकी उपासना करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, शाश्वत रूप से उनकी सेवा करते हैं। So even though the incarnation appears and disappears in this world, because this is a temporary world, but the Lord in the spiritual world is eternally present in His own spiritual forms, unlimited spiritual forms. क्योंकि ये भौतिक जगत अनित्य है, तो यहाँ पर भगवान के अवतार प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। So all the incarnations who appear in this world have their particular eternal spiritual form in the spiritual world. तो भगवान के जितने भी अवतार यहाँ पर प्रकट होते हैं उन सबके आध्यात्मिक जगतों में अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप हैं। So the conclusion which Prabhupada gives in the purport is, the Lord has no material form at all. तात्पर्य में प्रभुपाद जो निष्कर्ष देते हैं वो यह है कि भगवान का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं है, कदापि नहीं। But according to the liking of his different grades of devotees, he simultaneously exists in many millions and billions of forms. अपने विभिन्न श्रेणी के भक्तों की रुचि के अनुसार वे एक साथ अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, विद्यमान होते हैं। And they are all called Vishnu Tattva. और उन सभी को विष्णु तत्व कहा जाता है। That means they are the category of the personality of Godhead Krishna. इसका अर्थ ये है कि वे जो श्री भगवान कृष्ण हैं वे उन्हीं की श्रेणी में आते हैं। Because Krishna, the person Krishna, then his energies, his paraphernalia, like that there is variety in the absolute truth. सो परम सत्य में विविधता है, भगवान भी स्वयं है, उनकी शक्तियां हैं, उनके संगोपन हैं। So all these are simultaneously, eternally existing, and the acharyas have explained that they are all in different categories. सो ये सारे एक साथ शाश्वत रूप से विद्यमान है और आचार्य भी बताते हैं कि ये लोग अलग अलग श्रेणी में आते हैं। So personally the Lord is there and He has got His energies, different categories of energies. सो व्यक्तिगत रूप से भगवान स्वयं है और अलग अलग विभागों में उनकी शक्तियां भी हैं। Now the
personality of Godhead has his name, has his form, has his qualities, has his abodes. All of them are non-different from him. तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनके धाम हैं, उनके सारे वस्तुएं हैं, ये सब उनसे अभिन्न हैं. Which means that when we chant the name of Krishna in the form of the Hare Krishna mantra, Krishna, the person, is present in the sound form of his name. इसका अर्थ ये है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस नाम ध्वनि में विद्यमान हैं. But we now cannot understand how sound can be a person. अभी हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से ध्वनि एक व्यक्ति हो सकता है. But spiritual sound of the holy name of the Supreme Lord is the person himself. They are not different entities. तो जो भगवान का दिव्य नाम है, वो साक्षात भगवान ही है, वो साक्षात एक व्यक्तित्व है और वो भगवान से अभिन्न है. That is why Krishna says in the Bhagavad Gita, whoever remembers me at the end of his life, or whoever chants my name at the end of his life, directly attains me immediately. भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन के अंत में मेरा स्मरण करता है या मेरे नाम का उच्चारण करता है, वो सीधे मुझे प्राप्त करता है तुरंत. So that is because the remembrance of the Supreme Lord or the chanting of the name of the Supreme Lord is directly identical with the Lord himself. ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान का स्मरण करना या भगवान के नाम का उच्चारण करना वो स्वयं भगवान से अभिन्न है. So today some devotees are taking initiation. I'll explain the significance of this Diksha. So आज कोई भक्तगण दीक्षा ले रहे हैं, so इसका महत्व है. So this Diksha means it consists of Di and Ksha, two parts to this word Diksha. So दीक्षा दो शब्दों से बना है, दी और क्षा. So Di refers to Divyam Jnanam Yato Dadyat, the part of the Diksha word, Divyam Jnanam, transcendental knowledge. The first part, Di, refers to transcendental knowledge. So दीक्षा शब्द में जो दी है वो संबोधित करता है दिव्य ज्ञान को. So the process by which the spiritual master initiates, he gives transcendental knowledge to the prospective disciple. So ये प्रक्रिया है जिसमें प्रामाणिक गुरु हैं वे शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं. And Ksha refers to Kuryat Papasya Sankshayam. He completely nullifies all sinful reactions. और दीक्षा में जो क्षा है वो संबोधित करता है कि वे हमारे सारे पाप नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं. So we can imagine how serious or how significant is this whole process of initiation. So हम समझ सकते हैं कि दीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है ये कितनी महत्वपूर्ण है. Even though it's a fact that when one receives this Diksha from the bona fide spiritual master, there is awakening of transcendental knowledge and completely one becomes free from all sinful reactions. That's a fact. So ये सत्य है कि जब कोई ब्राह्मण रूप से दीक्षा प्राप्त करता है तो उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाशन होता है और उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है.
But the devotees who receive this initiation, they may not immediately after taking the initiation experience this in fullness. So जब हम दीक्षा लेते हैं उन्हें दीक्षा के तुरंत बाद इसका पूर्ण अनुभव होना संभव न हो. That is because of our material conditioning that we are not immediately able to experience that change which is actually happening inside our heart. उसका कारण ये है कि हमारे जो भौतिक प्रदूषण है हृदय में जो कल्मश है उससे कारण हमारे हृदय में जो परिवर्तन हो रहा है हम उसका आभास नहीं कर सकते तुरंत. So for us to actually come to that actual stage of experiencing that change that happens during Diksha ceremony, we have to actually practice seriously under the strict guidance of the spiritual master, exactly following whatever he instructs us in. दीक्षा के समय हृदय में जो परिवर्तन होता है यदि हमें उसका अनुभव करना है तो हमें बहुत गंभीरता से और कठोरता से प्रामाणिक गुरु के दिए हुए निर्देश उनका अनुसरण करना होगा. Therefore, in this Diksha ceremony, the most important part of this ceremony is the disciple takes vows and promises the spiritual master that I will chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day, 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra Japa every day, and also promises that I will follow the 4 regulative principles of avoiding 4 kinds of sinful activities. So दीक्षा विधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि शिष्य आकर गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा लेता है कि मैं सदा सोलामाला का जप करूंगा और 4 नियमों को स्नेह सिद्धांतों का पालन करूंगा. And Prabhupada says it's like a spiritual contract between the spiritual master and the disciple. श्रीलोक बताते हैं कि ये एक दिव्य आदान प्रदान है गुरु और शिष्य के बीच में. So Prabhupada says if you strictly follow rest of your life the vows you have taken, then I promise you that I'll take you back to God. श्रीलोक बताते हैं कि आप अपने आजीवन इन सब नियमों का कठोरता से पालन करेंगे तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपको भगवत धाम वापस लेके आऊंगा. Because the understanding is we are all belonging to Krishna, we belong to this spiritual world of Krishna, and we are actually meant to live there with Krishna, a blissful life full of knowledge, eternal blissful life full of knowledge. So समझ इस प्रकार की है कि हम आध्यात्मिक जगत यानी कृष्ण लोक के हैं और हम कृष्ण के हैं. सो हम कृष्ण के साथ उस आध्यात्मिक जो लोक में जीवन बिताने के लिए हैं. But somehow or the other, we have forgotten Krishna, we have been separated from Him, and we have almost forgotten Him completely. But Prabhupada has come to revive our original memory of Krishna. So किसी प्रकार से हम कृष्ण को भूल गए हैं और उनसे अलग होकर यहाँ आ गए हैं. इनको प्रभुपाद आए हैं और पुनः हमें वो कृष्ण की स्मृति पुनः स्थापित करने के लिए और कृष्ण से वापस जोड़ने के लिए. Just like Arjuna says at the end of Bhagavad Gita, when he became enlightened by the discourse given by Krishna, he says, Smritir labdha, nashto moha, smritir labdha. My illusion is completely destroyed, dissipated, and I have regained my memory. So गीता के अंत में भगवान कृष्ण से उपदेश सुनने के बाद जब अर्जुन का हृदय प्रकाशित हुआ तो अर्जुन बोलते हैं स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति मुझे वापस मिल गई. So same thing will happen to us if we follow after taking this Diksha strictly
the instructions of the spiritual master, especially chanting 16 rounds of Hare Krishna and following the four guided principles, the same transformation and change will happen. Our illusion will be completely destroyed, and our memory of Krishna, our relationship with Krishna, our original position in the spiritual world with Krishna, everything will be revived. So यही परिवर्तन जो अर्जुन को हुआ, इसका अनुभव हम भी कर सकते हैं। यदि हम कठोरता से प्रभुपाद के दिए हुए नियमों का पालन करें, तो हमें भगवान कृष्ण की स्मृति, उनके साथ हमारे संबंध की स्मृति, हमारे आध्यात्मिक जगत में जो हमारा कृष्ण के संबंध है, इन सारी चीजों की स्मृति पुनः जागृत होगी। And this can happen definitely when we go back to Godhead. This will happen, but it can happen even before you quit the present body. और ये संभव है जब हम भगवत धाम जाएंगे तब, किंतु भगवत धाम जाने के पहले इस वर्तमान शरीर में रहकर भी ये संभव हो सकता है। If somebody seriously practices and makes advancement very rapidly by strictly following all the rules, regulations and instructions of the spiritual master, then very quickly, actually Prabhupada says, chanting once the holy name properly, perfection can be attained. So यदि कोई गुरु के केवल नियमों का पालन करता है तो वो तीव्रता से भक्ति करेगा और इस चीज का अनुभव करेगा। और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के नाम का सिर्फ एक बार उच्चारण में हमें सिद्धि दिला सकता है। But presently we are committing offenses in chanting the holy name. So when we take Diksha, we understand that we should practice chanting offenselessly. जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें बिना अपराध के जप करने का अभ्यास करना चाहिए। So everyone, at least those who are taking Diksha, they should know what are the 10 offenses against the holy name and how to avoid those offenses. So हरेक को और विशेष तौर से जो लोग दीक्षा ले रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि 10 नाम अपराध क्या होते हैं और उनको उनसे कैसे बचा जाए। So devotees should actually, those who are taking Diksha should actually strive to know what these 10 offenses are and should also try to avoid those offenses and thereby perfect their chanting and become eligible to immediately transfer themselves to the spiritual world. So जो दीक्षार्थी हैं उन्हें ये 10 नाम अपराध पता होने चाहिए और उन्हें भरसक प्रयास करना चाहिए कि अपने जप में कैसे 10 अपराधों को टालें। इस तरह से वे तीव्रता से उन्नति करेंगे और अपने आप को भगवत लेने के योग्य बनाएंगे। So now we will have the Diksha ceremony, beginning with the devotees taking the vows. तो अभी दीक्षा समारोह प्रारंभ करेंगे और अभी सबसे पहले प्रारंभ होगा भक्तगण आके प्रभुपाद के सामने प्रतिज्ञा लेंगे।